Okay, we will discuss the multiple choice questions from similar triangle. So first question I am taking, the Ram goes 24 meter due west and 10 meter due north. So you know about the direction is already, that this is your east, this is west, and this is north and south is there. He is going 24 meter due west, 24 meter west में आता है, for instance this side, and 10 meter due north, 10 meter north में like 10 meter is there from here, and we want to know how far is the from the starting point. So starting point we are taking here, this one, so we want to find out the this distance is there only. So you can apply the Pythagoras. So you must do the square of 24, that is 576, and square of the 10 is 100. So the sum will be, this one will be the, inside the radical sign it will be 676. Just Pythagoras we will apply. So this is equal to the 26. So your answer is C part is the correct one. Question number 2. The two poles of height 13. One of the pole is 13 meter height and another is 7 meter height. This one. And the distance between their both the poles is given. This one is given 8 meter. And we want to find out the distance between their tops. ये हमें निकालना है. This one we want to calculate it. For the own convenience, आप दे दीजिए name like A, B, C, D. So what we will do, you must draw the perpendicular from here. You will do the perpendicular like M. So this is your 90. This is already in the 90, you know, because the poles are standing at the 90 degree angle. So this A, M, C, B, this is your point C, will be the rectangle, or maybe the square you can say, because all the angles is 90. So it will be the rectangle. So this is 8. So this AM will also be equal to the 8 meter. And whatever will be the length of AB will be equal to this MC, that is also 7. But this DC is given 13. So you can calculate the DM. So 13 minus 7 is 6. Now you can apply the Pythagoras in this triangle. AMD. So AD square is equal to AM square plus MD square. So this side will come the 10. So your answer is 10. Similarly, third question. A vertical pole is 10 meter long, cast a shadow 50 meter. 50 centimeter. Remember, the unit should be very careful. 10 meter long का ये pole है, इसकी shadow है 50 centimeter. So 50 centimeter you can change it to the meter is here only, because unit should be the same. So this is 0.5 meter, this one. And then he's saying, what is the length of the shadow of the pole? If the another pole is there, whose shadow is 12 meter is there, what will be the length of this shadow is there? That we want to find out. So because both the triangle will be the similar, so directly you can take 10 over 12. Just see now, by the way the answer, all the answer are given in centimeter, so that will be quite better कि हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. तो ये हो जाएगा 1000 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, और ये हो जाएगा आपका 1200 सेंटीमीटर. सो दिस इज 1000 over 1200 is equal to, this is 50 over this side, shadow will be the axis there only. You must solve this one. ये 20 cancel. So x is equal to 50 into 12. You can do the cross multiplication over 10 is here. 0 say 0, so that is 60 is there only. So your answer is 60 centimeter. So answer will be the none of these, because कोई भी किसी भी ऑप्शन में 60 centimeter is not given. Now the question number 5. The hypotenuse of a right angle triangle is 25. There is a right angle triangle is there. The hypotenuse is 25. For the own convenience, इसको हम 90 ले लेते हैं. ABC. This is. And other two sides is such that one 5 centimeter longer than the other. तो अगर ये this is x है, तो this will be what? X plus 5. So find the length of the
these sides are there. So one of the ways there कि you must do the AB square plus BC square is equal to AC square is there only. That you have to do. ये करना पड़ेगा. Then you can calculate x is there. So that is the quite length is there. तो करना क्या है, सीधा ये साइड रखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल x में 10 लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 suppose, and another side will be the 15. So just see square, sum of the squares of these two sides must be equal to this one. अगर है तो वही उसका आंसर होगा. तो simple just see now 10 square is 100 is here and 15 225. This is, so that is 325 is coming. 325 is there. So it means this cannot be the answer. This cannot be there only. You can check B. 15 square is 2225 and 200 square is 400. And that sum is equal to the square of the third side 625, which will be equal to this one. It means your answer is B. So direct you can do that. Similarly, the height of an equilateral triangle whose side is 12. Equilateral triangle है, side 12 में. This is 12. We are interested in the height of this one. So if you will draw the perpendiculars here only, so this perpendicular will divide this two sides into two equal parts. So this will be the 6. Now you can apply the Pythagoras. So 12 square minus 6 square. That is 144 minus 36. So this will be equal to 811. Sorry, 108 is there. 108. So you will take the square root of this one, that is 6 root 3. So answer is B. B is 6 root 3 is there. Question number 6. ABC is a triangle, is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. AB is equal to AC is given 13. This is given, you can take this as A, B and C is there. And this is given 13. Yeah, this will also be the 13. And the length of the altitude from A to BC. This length is given. AD is given 5. This is given 5 is here only. And you are supposed to calculate the length of BC. Must calculate the length of BC is here. So you can calculate this BD is there because 13 square minus 5 square, so that it will come the 12. And same is here. That is, this is the 12. And we are interested in BC. So BC will कितना होगा 12 plus 12 24. So answer is 24 centimeter. Simply you must apply the Pythagoras is here. Question number 7 is there. In a triangle, the perpendicular from the vertex to the base bisect the base. किसी भी ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं from any one of the vertex, it will bisect if it is bisecting the opposite side. ये केवल दो ही कंडीशन में ट्रू होता है. either it should be the equilateral triangle or should be an isosceles. Otherwise it will not be true from this one. Isosceles में the conjugate sides जो equal हैं, from that point you are going to draw the perpendicular on the opposite side, then it will be. तो right angle given है, then this is scalar is there, obtuse angle no, so your answer will be the B. Isosceles it is given. 8 is an equilateral triangle ABC. Equilateral triangle है. Now this is equilateral triangle means all the sides are equal, ABC, and AD is the perpendicular on BC. So AD will perpendicular, so it will divide into the two equal parts. This is. अगर own convenience के लिए मैं इसको A and A लूँ तो this is BD will be A by 2 is there. Then which of the following is 2 is there? Twice AB square is equal to 3AD square or the 3AB square is equal to this one. So simple you can create a relation is here. Now see AB square will be equal to होगा AD square plus BD square. Pythagoras लाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. A square is equal to AD square plus BD square means A square by 4. So this you will do A square minus A square by 4. So that is 3A square by 4 is equal to 4 multiply हो जाएगा AD से. It means 4AD square आएगा and 3AB square. So option is C is correct. This one. So direct fast you can do that. Question number 9. A rhombus of side 10 and one of the diagonal. आपको rhombus दिया है. Just let me construct the rhombus. Sides are given this one, and we know then that diagonal bisect to each other is there only. This side is given 10 and diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं. We know that
अगर ये 12 है तो दिस बिकम 6 is here only. So by the Pythagoras you can calculate this one, OD. So 10 square minus 6 square, 64, 8. So this is your 8. Twice of this one will be the diagonal is there. So direct you can do that, 16. 16 will be your correct answer. इसमें Pythagoras लगाएंगे तो OD आएगा, OD का twice करेंगे तो you will get the this second diagonal is here only. So question number 10 is ABCD is a trapezium whose diagonal AC and BD intersect at the point O, and O is given, this is 3x minus 1, OB is 2x plus 1, and OC is 5x minus 3, and OD is 6x minus 5 is already given. हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये AB is parallel to DC है. तो these two triangles will be the similar because this angle will be equal to this one, alternate interior angles. Vertical opposite angle is also equal, so you can say both the triangle are similar is there only. And if they are the similar, then you have to take the ratio of the corresponding side. तो अगर ये एंगल D is equal to this one है तो इसका अपोजिट साइड OC over this angle opposite side is AO will be equal to, similarly this angle will be equal to this one. तो because DOC triangle से we are taking, तो इस एंगल का अपोजिट साइड OD over, and this is equal to this one is there, that is OB will be the equal. Now you can take the ratio this way. One of the way is there only. Another way is there, simple. What you are supposed to do, ये वैल्यू रखकर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत तेजी से. जैसे x की वैल्यू अगर मैं इसके लिए चेक करूं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो what you will get is here only 6 minus 1, that is 5. So OE you are getting 5. And similarly, then you can calculate this OB, 2x, 4 plus 1, 5. OB is also the 5. Direct you can do that. Then OC, 5 to the 10 minus 3. So that is OC is equal to 7. Here you will put 12 minus 5 is also the 7 is there. So it means the ratio of these sides is already coming 1 by 1 is there. OC over AO. OC over AO, 7 by 5. And then OD is also the 7. Over OB is 5 is there. It means this is your answer. So direct you can do, instead of कि हम पूरा value यहाँ पर रखें OC, this is 5x minus 3, then cross multiplication you are doing, then you are going to. So one of the is given. Another answer will also be the possible क्योंकि you will get the quadratic equation. So second answer will also be the possible. But by the way ये हमको दिया हुआ है तो this is will be the your correct answer is there only, right? हो सकता है इसका दूसरा भी एक निकल सकता है आंसर बिकॉज यू विल गेट द क्वाड्रेटिक डिवीजन इफ यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एजेस साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट अ पैरेललोग्राम ऑलवेज. देखिए कैसे, ये मिड पॉइंट है, यू मस्ट ज्वाइन दिस मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए. दिस इज लाइक, जैसे फिगर थोड़ा सा, एक मोर सेकेंड, 1 second प्लीज. लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड. 1 second प्लीज. ओके, एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, दिस वन, यू कैन टेक द क्वाड्रिलेटरल दिस. ये मिड पॉइंट है, ABCD इनकी वर्टिसेस और इनके मिड पॉइंट भी आर टेकिंग. दिस इज मिड पॉइंट लेते हैं ऐसे, लाइक दिस वन. दीज आर द मिड पॉइंट इज देयर, P Q R S. सिंपल आप ज्वाइन करिए, देखिए ध्यान से, जस्ट ज्वाइन दिस AC. सो दिस इज योर मिड पॉइंट एंड दिस इज योर मिड पॉइंट इज देयर. सो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में जो पढ़ा था, दिस साइड विल बी पैरेलल टू दिस AC एंड हाफ ऑफ दिस वन. Similarly, you will take in triangle ABC, P is the midpoint and Q is the midpoint. So this PQ side will be parallel to AC and half of this one. So finally you are getting PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. So it will be the parallelogram. So direct you can say this is the parallelogram is there only. Parallelogram definitely it will be the parallelogram for any quadrilateral. So likewise direct you can do that. Question number 12. In triangle ABC, it is given that AB over AC is equal to BD over DC is already given. Angle B we are given, this is given the 70-degree angle, and angle C is given 50. We are supposed to find the angle BAD. This one you have to find out. देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में एक थ्योरम हुआ करती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, that this question is based on that. So what we will do is here only, we are supposed to draw the line parallel to this AD from this point is there.
C से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल and join this one, and you can give like this, the name is P is here. This line is parallel to, we are doing in a construction is there only. Okay, so what will happen, देखिए this is your 70, this is 50, so this angle will be your 60 is here only, this will be the 60 degrees there, and this is your 50, so this angle will also be the, see now this angle will be equal to 60 plus, because by the linear pair this will be the 120 is there only. This is a 120 degree angle, this one. अब देखिए इसमें करना क्या है, we are already given AB over AC is equal to BD over DC. BD over DC we are given is here only. So but just see now, this AD is parallel to PC we are doing, तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए AB over this, you can take the like this, so this AD is parallel to PC is there, so by the BPT you can say then AB over AP will be equal to BD over DC is there. But देखिए AB over AC is also equal to BD over DC, तो from these two what you will get, AB over AC is equal to AB over AP, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, दैट इज AC is equal to AP. दिस इज यू आर गेटिंग, इट मीन्स ये हुआ कि ये साइड इसकी इक्वल होगी, एंड इफ दे आर द इक्वल एंड दिस इज योर एंगल 120, so this angle will be equal to this one, opposite angle will also be the equal, so what you will get, that is 20, तो ये 60 हो जाएंगे दोनों, but so this will be angle is 30, this will be the 30, and whatever will be this angle, this angle will be equal to this one, corresponding angles are equal, so this will also be the 30 is here only, so your answer is A. Now the question number 13 is there, we are given then ABC is a triangle है, this is ABC is a triangle, and DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, this is already given, DE is parallel to BC, we are given AD is 2.4, AE is 3.2, EC is 4.8, and we are interested in AB. देखिए this line is parallel to, so BPT direct you can apply. देखिए अगर you are taking AD over AB, अगर if you are taking this side AD over AB, whatever is the ratio you are taking with this side, same ratio आपको इधर लेना पड़ेगा, तो AD over AB you are taking, तो AE over AC will be there, AE over AC. You know that is AD, we are interested in AB, this is given to 2.4, and AC will do, so you must add this 7, 8, so this is your 8 over, sorry AE हमको दिया है 3.2, this is 3.2 over AC will be sum of these two, so that is 8 is here only, so you will calculate AB is equal to, that is 2.4 into 8 over 3.2, so decimal cancel, so 8 3 ja 4, 4 से 2, that is 12, 6 centimeter, so 6 centimeter is your answer. B option is correct is here only. Okay, now question number 14 is, then we are given, then D is parallel to B is already given, yeah, AD over DB is already given, this ratio given हमको AD over DB, so whatever is the ratio of this side you are taking, same we will take, AD over DB you are doing, then AE over EC, EC is here only. AD over DB is already be given 3 over 5 is equal to, we are given the AC, this is given, we are interested in AE, तो इसको ओन कन्वीनियंस के लिए x ले लीजिए, तो AC कितना हो जाएगा 5.6 minus x, क्योंकि this is your 5.6 is here, this one, so you will put the value, so AE is what, x over EC 5.6, you can do the cross multiplication, so you will get is here only, then 5x is equal to, you will multiply this one 16.8, so x is equal to, sorry EC is 5.6 minus x, sorry this is, so 5x is equal to this one,
and minus 3x is here only. So this 3x, this side we will transpose, so it will become 8x is equal to 16.8. So 8x will be equal to 2.1. This one. So D is the correct answer is there. Now next is the question number 15. ABC is a triangle. ABC is a triangle. This is given. And AB is given 6 and AC is given 8. AD is the bisector of angle. AD is the bisector which is bisecting this angle is there. This one. We are interested in BD over DC. देखिए ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है. AB over AC will be equal to BD over DC. जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था. Same is there only. That which we are applying. This one is there. So direct you can do that. That is AB over AC is equal to BD over DC. So A 6 over 8. AB over AC 6 over 8. That is equal to BD over DC. BD over DC. So that is you can cancel by 2, 3 and 4. 3:4. So your answer is A. Question number 16. Now in the given figure find the value of X in terms of ABC. X को in terms of ABC निकालना है. What is given is here only. We are given MN is given B. MN is B. NK is given C. ML is given A. And PN is given is X is here. देखिए यहाँ we should be very careful is here. We want to include these sides is there. तो अगर PN और LM को include करना है तो यहाँ ratio you have to take the two different triangles you are getting. One of the triangle is KNP, another is LMK. This one is there only. Means this is equal to this one है तो ये line इसके parallel हुई तो that both the triangle will be the similar you can say like. See, तो हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ लेंगे KN over इस triangle में PNK में we are taking, then KM will be equal to, if you are taking this side then whole over, then PN over ML. Remember you can't say that NK over MN is not equal to PN over LM. Remember this is the very very important point is here only. ये over ये cannot be equal to this one. अगर आपको ये side include करना है तो you are getting the two different triangles हैं यहाँ पर. एक है PNK this one and another is the triangle LMK. LMK. This is the K is the point is common and this PN line is parallel to this one is here only. So then KN is what? KN हमको दिया है C over KM. तो B plus C is equal to PN is X over ML is A. So you want to know the value of X in terms of, तो X equal to क्या होगा? AC over B plus C. So this is your option A is correct. So directly you can do that. But you know this rule is there only. कि if you want to include this side and this one in two different triangles में तो आपको पूरा side लेना पड़ेगा. 17. ABC it is given that AD is the internal bisector of angle A. Same story जो अभी कर रहे थे इससे पहले ये क्वेश्चन किया ना. This one is there same. So we are given is BD is 6, 4 and DC is 5 and we are interested in AC. तो देखिए क्या होगा सीधा AB over AC. Simple direct you can apply that BD over DC. By this one we were doing इससे पहले हमने किया था ना ये वाला this one here. So what you will get this AB is 6, OAB AC is X, BD is 4 over 5. So X is equal to कितना होगा 30 over 4. That is 7.5. So your answer is 7.5 is here on. Now question number 18. Here you should be very careful. Triangle ABC similar to triangle PQR है. तो and the perimeter of both the triangles are given. You have to find out the EF is there only. देखिए एक कंडीशन होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो AB ओवर D इज इक्वल टू BC ओवर EF इज इक्वल टू AC ओवर DF. देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है. इसका मतलब है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड AD ओवर DE फर्स्ट टू साइड
then BC over EF, AC over DF will be the equal. एंड द रेशियो ऑफ द, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल नहीं होता है, उनके पेरीमीटर का रेशियो भी उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि एबीसी से हमने स्टार्ट किया, ओवर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ विल आल्सो बी द इक्वल. राइट, दिस वन. राइट, तो अब देखिए आपको व्हाट इज द गिवन. वी आर गिवन एबीसी का ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया 30, डीईएफ का दिया है 18 इज इक्वल टू, वी आर इंटरेस्टेड इन ईएफ के साथ, मतलब बीसी के साथ आएगा. देखिए क्योंकि लास्ट टू बीसी यू आर टेकिंग, देन यू कैन कैलकुलेट ईएफ. अगर बीसी गिवन है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द डी. तो बीसी वी आर गिवन 9 ओवर ईएफ. तो ईएफ इज इक्वल टू, यू विल डू, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 18 ओवर 30. यू कैन सॉल्व दिस वन. 3 10 एंड दिस इज 6. 54 divided by 10, so 5.4. So 5.4 is your, एक मिनट, just a minute, no, 9 into 6. 9 into 3 से 10 गया, या 3 से 6. So 9 into 6, 54 means divided by 10, so 5.24. This is your answer is there. Question number 19. In a triangle, it is given that AB is equal to 9, BC 6 and CA is 7.5. दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ABC ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABC. वी आर गिवन AB is equal to the 9 centimeter, BC is 6 centimeter and CA is 7.5 centimeter. Another triangle is there given DEF, we are given DEF and EF is given 8 centimeter. एंड बोथ द ट्रायंगल आर द सिमिलर. अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इट मीन्स इनकी कॉस्मोस साइड का रेशियो इनके पेरीमीटर के बराबर ही होता है, जो क्वेश्चन नंबर 18 राइट नाउ, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन पेरीमीटर इज देयर. तो डायरेक्ट यू कैन डू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखिए 9 + 6 15 एंड 7 22 to 22.5 ओवर DEF, एरिया ऑफ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ द DEF. डायरेक्ट कर रहा हूं मैं. दिस इज इक्वल टू, नाउ अब BC लिया है 6, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वन ओनली, मीन्स EF और BC का रेशियो विल बी इक्वल टू. तो दिस इज द BC 6 ओवर EF is given 8. This is, so you must calculate, so you will get the perimeter is there. So what will be the 22.5 into 8 over 6. 2 3 जा 2 4 जा 3 से गया ये 7.5. So this will be the 30 is there, and 30 is not given in the option, so your answer will be none of these. Now the question number 20 is here. In the given figure, ABC is similar to triangle PQR. It means ये हुआ कि angle A is equal to angle P, B is equal to Q, C will be equal to R, AB over PQ is equal to BC over QR and AC over PR होगा. You should be very very careful here only, right? We are interested in Y and Z. Y plus Z is there. ठीक है, तो AB मैं डायरेक्ट करूँ, AB 4/√3 over PQ is what, 3 is equal to BC 8, because both are given similar, and QR given is 6 is equal to, sorry, QR, BC is given 8 and QR is given 6 is all right, and AC, ये हमने गड़बड़ किया, AC अगर हमने लिया है तो वी आर सपोज्ड टू टेक द PR इज देयर ओनली, है ना. ये जस्ट लुक एट हियर नाउ, एक मिनट, 1 सेकेंड, बिकॉज बोथ आर सिमिलर इज देयर ओनली. तो AB ओवर PQ, AB हमारा Z है, सॉरी यहाँ AB हमारा Z है, ओवर PQ इज 3, Z over 3, दिस इज, देन AB over PQ, then BC over QR, BC 8, QR is 6, AC 4/√3,
over PR. PR is y. देखिए यहाँ से जो z निकलेगा तो z इक्वल टू यू विल डू 3 इंटू दिस 8 over 6 2 4, तो z आपको आएगा 4. Here only you can calculate the y is here only y. तो 6 into this one, so 8 3 जा 3 root 3, y आएगा आपका 3 root 3. You must add these two. Y you will get from here only. So y plus z you will do 4 plus root 3. So your answer is this one. You should be very careful is here only. क्योंकि if the triangle ABC similar to triangle PQR है तो AB first two over PQ का BC over QR AC over PR will be the equal. Now the question 21. ABC and BDR are the two equilateral triangle. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें. ABC equilateral triangle है. ABC is an equilateral triangle. और इसी में BD is given है and D is the midpoint of BC. D का midpoint है this one. Another triangle is here. This is also the similar equilateral. तो अगर इस साइड को मैं A लेता हूँ for instance ये, तो BC is also here, so BD will become A by 2 is there. So here is all the sides are A by 2 and here is all the sides are AC. We want to find out the area of the triangle, ratio of their triangle. तो area of triangle ABC over BDE will do. ABC आपको न्यूमरेटर में लेना है, BDE डिनोमिनेटर. यू शुड बी वेरी केयरफुल. तो ABC का एरिया मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या होगा √3/4 A स्क्वायर एंड DEE BDE का एरिया क्या हो जाएगा √3/4 साइड दैट इज A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर. देखिए √3/4 से ये दोनों गया, आपको यहाँ मिला A स्क्वायर बाई A स्क्वायर बाई 4. तो 4 विल गो इन द न्यूमरेटर, तो 4A स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, तो यू विल गेट 4 over 1, दैट इज 4:1. तो आंसर इज 4:1, न कि 1:4, क्योंकि यहाँ 1:4 गिवन है. बहुत सारे बच्चे इस पर टिक कर देते हैं, बट योर आंसर इज नन ऑफ दीज. यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज वी वांट टू नो द रेशियो. हमें ABC एंड BDE का, तो ABC पहले लेंगे देन BDE वी आर टेकिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज now 22. It is given that the triangle ABC is similar to triangle DEF. तो triangle बना लीजिए for the own convenience. This is your A, B and C. Another triangle is DEF. And we are given angle A is 30 degree. A is 30. Angle C is given 50. And AB is given 5. तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा. सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180, यू नो दैट. एंड AC इज गिवन 8 एंड DF we are given is here only 7.5. and we want to check which of the condition is true. Angle ABC, triangle ABC similar to triangle DEF है, तो angle A is equal to angle D होगा, तो angle A is 30, this is also the 30, right? and B is equal to angle E. B कितना 100, तो E will be the also be the 100 is here, and C will be equal to F, so this is your 50 is here only. अब now we are interested which one is true, because देखिए अल्टीमेटली ध्यान से देखो DE गिवन है, तो इसका मतलब DE के लिए चेक करो, सिंपल सीधा सा सिंपल DE के लिए चेक करिए. तो देखिए व्हाट दिस DE कहाँ रहा है 50 अपोजिट साइड, दैट इज DE, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल आर गिवन सिमिलर, तो इक्वल एंगल अपोजिट साइड रेशियो विल बी इक्वल. तो DE ओवर 50 डिग्री एंगल का यहाँ साइड क्या AB, दैट इज ऑलरेडी गिवन 5, राइट. उसके बाद तो आप कोई भी साइड ले सकते हैं, लेट विच इज ऑलरेडी नो दैट 100 का अपोजिट 8 ओवर या 100 का 7.5, दिस इज. एंड यू मस्ट सॉल्व विद दिस वन इज देयर ओनली, कि ये DE कैलकुलेट होकर 12 आता है या नहीं आता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो DE अगर आप यू विल कैलकुलेट इज हियर ओनली. अगर मैं D को इसको कैलकुलेट करता हूं यहाँ, तो यू मस्ट चेक इट इज देयर ओनली, देखिए D इज इक्वल टू ये आता है कि नहीं. तो 8 5 जब 40 ओवर इंटू 10 हो जाएगा ओवर 75. सो दिस इज 5 से 25 15 और 5 से क्या 2 और 5 से क्या ये 3 देन 8 16 over 3. So none of them is there only. So your answer is none of these. Direct you can do that. Question number 23.
वी आर गिवन द AC इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ये हमको 8 सेंटीमीटर दिया है. AD we are given the 3 centimeter. We are interested in BD. This is X. And the angle ACB. ये एंगल हमको इसके बराबर दे रखा है. This is there. हमें निकालना है BD is there only. तो देखिए, अब इन दो ट्रायंगल में लीजिए, ये एंगल इसके बराबर है, तो जस्ट टेक इन ट्रायंगल ADC एंड ACB. ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADC ले लीजिए. ADC. This is equal to this one. Angle A is common. So, and this angle 1 is equal to angle 2 होगा. That is the third angle is there. So, it means both the triangle are the similar. You can say the triangle ABC is similar to triangle ADC. अब equal angle opposite side ratio equal होता है, तो just you can start from here. D का opposite क्या होगा? AC. That is 8. ये एंगल किसके बराबर है? बड़े वाले में this का, इसका opposite क्या होगा? AB. That is X plus 3. Direct I am doing is equal to, you can do the fast. एंगल 1 ओवर अपोजिट क्या है? 3 ओवर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 का अपोजिट बड़े वाले में 8 एंड वी आर इंटरेस्टेड इन x, तो इतना ही मोर देन एनफ टू कैलकुलेट. सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 64. 64 माइनस 9 इज 55. सो 3x इज इक्वल टू 55. यू कैन डू द फर्स्ट. x इज इक्वल टू क्या होगा? 55 ओवर 3. सो आंसर B इज द करेक्ट वन इज देयर. हियर यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर आप रेशियो ले रहे हैं साइड्स का, तो इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स रेशियोज आर ऑलवेज इक्वल. नाउ दिस इज द क्वेश्चन इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन 24. BAC इज दिस इज गिवन 90. AD परपेंडिकुलर है. वी आर सपोज टू विच वन विल बी द ट्रू इज देयर. देखिए इसने क्या किया है, BC साइड को एक बार इंक्लूड किया यहाँ पर और ABC को. एंड वी नो दैट कि हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ADC के. देखिए दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज द एंगल C इज द कॉमन. दिस इज C इज कॉमन एंड दिस एंगल 1 will be equal to the angle 2, third angle. Direct you can do that. And similarly this triangle, तो finally you are getting what? The triangle ABC. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ABC similar to triangle ADC. This is. And similarly you will see that this triangle ABC will also be similar to this triangle ADB. Look at here. This is also the 90. This is 90. And this angle 2 is the common for both the triangles. And this angle 3 will be equal to this angle 4. Third angle is there. So finally here is also again you are getting then ABC similar to triangle ADB. This one. So triangle ABC similar to ADC and ABC is also similar to ADC. B is there only. So it means the triangle ADC similar हो जाएगा triangle ADB के. Now you can take the ratio of their corresponding side. अभी इसमें ट्रिक क्या है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ. तो जब इनका रेशियो लेंगे तो देखिए look at here. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 का अपोजिट साइड DC. एंगल 1 का अपोजिट साइड हो गया DC ओवर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अपोजिट साइड क्या होगा? AD इज इक्वल टू एंगल 4 अपोजिट साइड इज AD ओवर एंगल 3 इज इक्वल टू 4 था. 3 का अपोजिट साइड इज BD इज देयर. तो देखिए व्हाट यू आर सेड गेटिंग इज हियर इज AD इंटू AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC. तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC कहां पर है? देखिए यहां पर इसमें. तो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर इज देयर ओनली. राइट, C इज द करेक्ट आंसर इज देयर. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें शॉर्टकट करें तो इसका तरीका क्या है? हाउ कम टू नो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? तो ये आएगा. देखिए मैंने क्या किया, इस AD स्क्वायर को ब्रेक कर दिया. दैट्स AD इंटू AD हियर. तो अब इस एक AD को BD के नीचे ले जाएंगे तो व्हाट विल राइट? BD ओवर AD. और इस CD को इस AD के डिनोमिनेटर में लाइए लाइक हियर ओनली. तो यू कैन नो हियर ओनली कि विच एंगल वी आर सपोज टू मेक अ सिमिलर. देखिए D कॉमन है तो सब BAD. इसका मतलब हमको ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल हियर इज द ACD. अगर मैं ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दूंगा तो यू विल गेट दिस वन इज देयर ओनली. राइट, अब यहां देखना क्या होता है. अगर मैं यहां करता हूं तो BC इंटू CD इज इक्वल टू BC इंटू BC. तो BC और BC आउट हो गया, तो यू आर नॉट गेटिंग एनी ट्रायंगल इज हियर. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. यहां देखो AB ओवर BC, तो ABC आएगा. अगर मैं BC को ब्रेक करता हूं, लुक एट हियर नाउ, BC इंटू BC यू विल डू
तो इस BC को इसके नीचे लाएंगे तो ABC आएगा. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ABC और इस AC को इसके नीचे लाएंगे, C कॉमन होगा, देन अगेन ABC इज कमिंग. तो इट मीन्स सेम ट्राइंगल. तो दिस कैन नॉट बी योर आंसर. ये दो नहीं हो सकते. यहाँ ये आंसर था नो डाउट. यहाँ भी चेक कर सकते हैं ABD एंड ACD. Here is you are getting ABD this one, and here you will get the then here is, इसको अगर आप करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा. AB into AC is equal to AD into AD this one. तो इस AD को अगर मैं इसके नीचे लाता हूँ एक, और इस AC को इसके नीचे ले जाऊँ AC here, तो यहाँ ACD मिला, and here is you are getting ABD. तो यहाँ you are getting in this triangle is there and this one. तो ultimately we are supposed to make these two triangles other. लेकिन यहाँ AD square will come BD into DC. That cannot be equal to the, because if you will take the ratio is here. जैसे यहाँ हम ratio ले रहे थे तो 1 is equal to 2 था, 3 is equal to this one, and this 90 we are taking from this one. हमने इससे start किया, इसका opposite side AC लिया over. This is opposite side is AB is there. AB. So you cannot get the product of this one is there only. So this is also not included. So your answer is C is here. बहुत अच्छा question है, very good question. Okay, now next is question number 25 is here. In a triangle ABC and DEF, there the two triangles are there. It is given that we are given this one. You have to find out which angle will be equal to. So these two triangle become a similar. इसमें एक correction है कि we want to prove is there, then what should be also there with this condition कि though the triangles become a similar is here only. ठीक है, this is the correction in this question. तो here we are given the triangle ABC and DEF. We are given AB this side over DE and BC over this one is given. Then which angle should be equal? So these two triangles become a similar. तो ये already we know कि अगर दो sides का conjugate sides का ratio equal है तो उनके बीच का angle must be the equal, middle included angle must be the equal, then they will be the similar. तो AB over DE है और BC over DF है, तो इनकी जो included angle क्या होगा, B होगा इन दोनों साइड से, या included angle D होगा, तो angle B equal to D होगा, then these two triangle will become a similar. तो इसमें आपको C will be the correct answer is there. अब now the question number 26. ABC and DEDF दो ट्राइंगल हैं. ये क्या बोल रहा है कि नॉट सिमिलर. ही इज आस्किंग फॉर नॉट सिमिलर. किस कंडीशन के साथ में सिमिलर नहीं होंगे. देखिए ABC फिगर ड्रॉ कर लीजिए एंड ट्राइंगल दिस इज योर EDF. तो अकॉर्डिंग बिकॉज दिस इज बोथ आर द सिमिलर व्हेन दिस टू ट्राइंगल विल नॉट बी द सिमिलर. तो आप नॉट के लिए ये चेक करो किसके लिए सिमिलर होंगे. AB ओवर ED is equal to BC over DF and AC over EF होगा because they are the similar. लेकिन we are interested in no. तो इसमें देखो कहां पर ये साइड का रेशियो नहीं आता है. तो यहां देखिए BC ओवर FD आ जाएगा, ये FD इसके नीचे आ जाएगा, और अगर AC ले रहे हैं तो EF आ रहा है, तो ये दिस वन ये नहीं हो सकता. हियर इज द B में देखो AB you are taking, then ED is there, ED is here, and then EF you are taking, then AC should be there. तो EF है यहाँ पर और AC भी है यहाँ पर, this is there, तो this cannot be there. यहाँ देखो BC, अगर मैं BC ले रहा हूँ तो मेरे को क्या चाहिए DF, तो BC के साथ मुझे क्या चाहिए DF is there, लेकिन DF is कहीं नहीं है, इसका मतलब this cannot be, this is. तो आंसर is your C part is there. Question number 27. Triangle ABC and DEF, they are given. We are given कि triangle ABC and triangle PQR. These two triangles, not PQR. This is DEF. These are the two triangles. We are given. हमें दिया है एंगल B बराबर किसके, एंगल E के. एंगल F इज इक्वल टू है एंगल ये C है, this is equal to this one, and we are given, then it means automatically you can say the third angle will also be the equal. जब दो एंगल इक्वल है, third will also be the equal, so they will be the similar. It means you can say the triangle will be the similar. लेकिन AB is the 3 times of DE. तो DE अगर
x है तो AB will be the 3x is there. तो no doubt both the triangle are the similar, लेकिन they cannot be the congruent. तो ये बोला congruent but not similar, तो ये होंगे similar but not congruent. B is the correct one is there only. They both the triangle will be similar, क्योंकि similar तो already हो ही गया, क्योंकि two angles are already equal, so third will automatically will be the equal is there only. So direct you can do that. 28. Triangle ABC and PQR, we are given AB over QR, we are given AB over QR, BC over PR, BC over PR, and CA over PQ. CA, the CA over PQ we are given. Then we want to know which triangles. अब ये देखो ये रेशियो कहाँ पर आता है, यहाँ देखिए चलिए AB के साथ QR आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, एंड BC ले रहे हो तो PR is coming, yes, and then you are taking CA then PQ. It means A option is correct. Just no need to check other one. क्योंकि यहाँ देखो CB over PQ आएगा, but here the CB over PR is given, so this cannot be there. BC over PQ is not given, so this cannot be there. This is PQ, like you can take the CA. CA you are taking, then PR should come here only, so that is not given, so this cannot be here only. So your A option is the correct one is there only. 29. In the given figure, two line segment AC and BD intersect each other at the point P such that this is AP is given 6, PB is given 3, and PC is given 2.5, and PD is 5 is here, and this angle 50. So this is also the 50. You know that particular point angles are equal. CDP we are given. हमको ये angle भी दिया है. This is given the 30 degree. तो ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 100, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स इज 180. अब नाउ यू मस्ट चेक किस साइड का किसके साथ में रेशियो इक्वल हो रहा है. देखो 3/5, 3/2.5, 3/2.5 विल बी इक्वल टू होगा 6/5, 6/5 दैट इज इक्वल इंक्लूडेड एंगल. तो ये साइड ओवर ये और इस साइड ओवर ये का रेशियो इक्वल है, तो बोथ द ट्रायंगल सिमिलर हो गया. डायरेक्ट यू कैन डू. तो ये दिस एपी का अपोजिट एंगल बी पीडी का अपोजिट एंगल सी के बराबर होगा, तो दिस एंगल विल बी द 100 डिग्री और ये ऑटोमेटिकली विल बी 30. सो वी आर इंटरेस्टेड इन पीबीए, इन पीबीए. सो योर आंसर इज नन ऑफ दीज because 100 is not given. क्योंकि these two triangle are the similar. This side over this is equal to this over this one, and include angle equal, so both are the similar. और once the triangle are the similar, then equal side, जिन side का हम ratio ले रहे हैं उनके opposite angle equal होते हैं. Always keep it mind. 30 is in the given figure ABC similar to this one, BC over QR, then the area of the triangle PQR in this one. तो ये theorem है, लेकिन वो by the way इस समय ये सिलेबस से आउट है, बट वी नो दैट कि इफ द टू ट्रायंगल आर द सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स उनकी कॉस्पेंट साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है. तो दैट इज पी क्यू आर यू आर टेकिंग, तो दैट इज यू कैन से द क्यू आर स्क्वायर ओवर ए बी सी, दैट इज बी सी स्क्वायर, बट वी आर गिवन इज हियर ओनली बी सी ओवर क्यू आर. तो क्यू आर ओवर बी सी विल डू दैट, व्हाट विल गेट 3/2. तो 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा टू गेट द रेशियो 9/4. तो योर आंसर इज 9/4 इज दियर. बट बाय द वे 9/4 इसमें नहीं दिया है, क्योंकि BC ओवर QR करना है. देखिए PQR से हमने स्टार्ट किया है, तो QR विल कम इन द न्यूमरेटर इज दियर. तो QR ओवर BC करोगे तो दैट इज 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो नन ऑफ दिस इज योर आंसर. इसमें बच्चे बहुत तेजी से करते हैं, तो वो 4:9 they give the answer is, so 4 is not the correct answer. देखिए यहाँ देखो ट्रायंगल PQR we are taking in the numerator, तो ट्रायंगल PQR की साइड should come in the numerator, तो QR डिनोमिनेटर में, तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, then it will come in the numerator is there. 31 the line segment joining the midpoints of the side of a triangle for 4 triangles each of which is. देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर हम उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो वो ट्रायंगल ऑलवेज ओरिजिनल ट्रायंगल का सिमिलर होगा. देखिए ये दिस इज द मिड पॉइंट P, Q इज द मिड पॉइंट.
So P and Q is the midpoint. So by the midpoint theorem in the 9th class में पढ़ा था, this side will be parallel and equal to half of this one. तो ये this is also the midpoint है. So what you are getting then PQ is parallel to this one हो रहा है. तो देखिए ये एंगल इसके बराबर हो गया. Similarly this angle is equal to this one. तो this triangle, smaller triangle is similar to this bigger one is there only. ये ऐसी ये triangle इस बड़े के होगा, ये भी बड़े के होगा, this one all will be. So then similar to the original triangle. So B is your correct answer is there. Question number 32 is there. We are given triangle ABC and PQR are similar. Area of triangle ABC 16, PQR is given this one. We are given BC is equal to 2 centimeter, but we are interested in PQ. देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब हमने BC लिया तो BC हमने लिया लास्ट 2 लेटर, तो हम we can calculate QR, but we are asked the PQ. The PQ cannot be calculated. See the windows, none of these. You should be very careful. 33. ABC is a triangle. AC is given BC. AB square is equal to this one. तो AB square is equal to 2AC square है, इसको 2 बार लिखते हैं. AC square plus AC square. And one of the AC square is equal to BC. So what you will get? AC square plus BC square. Because this one AC is equal to BC is given. So it means the converse of the Pythagoras. If one side square is equal to sum of the square of the two side होता है, तो first side जिसका स्क्वायर किया उसका अपोजिट एंगल 90 होगा. तो देखिए what is given is here. We are given is here A, B is here and C is here only. तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों क्या रहा, तो इसका एंगल सी इज विल बी द 90. तो ऑप्शन डी इज ट्रू, दिस वन. क्वेश्चन नंबर 34. सो लुक एट हियर नाउ. दिस क्वेश्चन नंबर 34 इज इन द गिवन फिगर ABC राइट एंगल एट B, AD and C are the two medians. This is given. AD is the median, C is the median is there. AC is equal to 5. We are given this is the 5 centimeter. And we are given AD is equal to 3 root 5 over 2. This is we are given. We are interested in this EC. We are interested in this EC is there. तो देखिए इसमें अगर इन ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस लगाइए, then BD will be the half of the BC. Then again you must apply the Pythagoras in EBC. So BE will be half of the AB. And then in triangle ABC. So from here only you will get this result. And direct you can remember this one is there कि किसी भी right angle triangle में if we draw the median of the other two angles, तो उनसे जो side बनेगा this AD का 4 times square and EC 4 times square is always equal to the 5 times of the hypotenuse square is there only. This is the result you can remember is here only. In this condition right angle triangle में midpoint is there from the other two angles, then this condition will be true. So if you will solve this one and put the value, you will get EC square is equal to 20 and then EC is equal to 2 root 5 is there. But 2 root 5 is not given here. So in this question, your answer is the none of these is there. Now 35 is ABC and DEF are the similar triangle. DE is given 3, EF is given 2 and DF is given 5. BC is 4. Find the perimeter of this one. Perimeter of triangle ABC. तो देखिए बोथ आर द सिमिलर, तो इनकी कॉस्पोनेंट साइड का रेशियो इनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा. वी नो दैट इज देयर ओनली. तो डायरेक्ट करिए यहां से. देखिए BC के साथ में कौन सा साइड आएगा? BC. BC के साइड में आएगा EF. EF is 2. डायरेक्ट यू कैन डू. And the perimeter of the triangle ABC. We are interested in the perimeter of the triangle ABC. And perimeter of the triangle DEF. So perimeter you can add this one. So what you will get? 4, 7, 7.5. This one. And BC is already we know that is 4. So देखिए 2 से गया 4 2 times and 2 into 7.5 15. So answer A option is your correct. So fast you can do that. 36. ABCD is rhombus. एक rhombus है. This is diagonals are given 8 and 10. So we know कि rhombus के जो diagonals होते हैं वो they bisect to each other at 90. So this is one of them 8 है, तो this will become a 4. And this is another is 10. So this will become a 5 is here. So you can calculate this AB because all the sides are equal. So you will apply Pythagoras here only. Then 5 square plus 4 square, 25 plus 16, root 41.
this is you will get root 41 is here, or this value you can put here. Fast you can do the 4 into AB square, that is 41. So it should be equal to the 164, and 164 is not given is here only. So your answer is none of these. You should be very careful is there, क्योंकि यहाँ diagonals are given है, diagonals given है, and we know that कि diagonal bisect to each other at the 90 is there. So this is 8 है, this is become 4, this will be the 5. Pythagoras you will apply 25 plus 16, that is 41 root, and you must put it here because all the side will be the equal. So 4 times of this one, and root cancel, this one is there only. Now next is the 37. ABC is a right angle triangle and BD is the perpendicular AC. तो मैं इसको फिगर को पाइथागोरस वाली ही कंडीशन में बनाते हैं. Then angle B is the 90, B is the 90, C is here, this is given 90, and we are given the perpendicular is here BD. So AC we are given 9, AD we are given 3, so DC become a 6, and we are interested in BD is there. तो देखिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AD इंटू DC. You will get this is the Pythagoras. If you will make these two triangle other, so this result is directly you can remember BD square is equal to what you will get, AD into DC, and AD we are given 3, DC we are given 6, so that is 18, and so BD will be equal to what, 3 root 2. A is the correct answer. Now 38 question is here. ABC is a right angle triangle at C. This one. External bisector of angle B. ये external bisector है. This angle अगर X है, this is also the X is here only. External angle given equal है. This is X. This is also the X is here only. And produced in this one, ABB are given 15, BC is 9. You are supposed to calculate the AD is there. So first of all, by the Pythagoras, you can calculate the AC. So we know this is कि AB square will be equal to होगा हमारा BC square plus AC square. So ABB are given 15 square, so that is direct I am doing 225. BC is 81 plus AC square. So AC square will be equal to 225 minus 81, that is 144. So AC is the 12. We know this side is 12 is here only, right? लेकिन देखिए, we are interested in AD. We are interested in AD. हमें क्या निकालना है? This AD is there only. तो इसमें क्या करना है? एक्सट्री एंगल बाइसेक्टेड जो प्रॉपर्टी है वो उसको ध्यान से सुनिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि ये ट्रायंगल ABC है, and this is the extreme angle. If we bisect this one is there only. ये एंगल इसके बराबर है. This is X and this is X, and they are going to intersect to this is at the point D. तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं. Just simply R. This is. So what you will get? This angle X है, तो this is also become a X is here only, right? और this angle X है, this is also the X is here. So what will happen? This line will be equal to this one. AR will be equal to RC is there only, because the conjugate angles जो दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड विल आल्सो बी द इक्वल इज देयर ओनली. लेकिन इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, सॉरी सिमिलरिटी लगाएंगे, तो देखिए AB ओवर AR, व्हाट यू विल गेट, AB ओवर AR दैट विल बी इक्वल टू, बिकॉज AB यू आर टेकिंग कंप्लीट, तो दिस कंप्लीट साइड लेना पड़ेगा BD ओवर AR, दिस वन ये लेंगे तो ओवर CD इज देयर. बट AB is AR is equal to what? AC is there. So what exactly is the result you are getting? We are getting AB over AC बराबर BD over CD. तो इस रिजल्ट को थोड़ा देखिए ध्यान से. क्या मिल रहा है हमको कि ये कॉन्जुगेट साइड का रेशियो, जिन साइड से एक्सट्री एंगल बन रहा है इसको एक्सटेंड करके और इस साइड से बन रहा है, तो इन दोनों साइड का रेशियो जहां पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है B से उसका डिस्टेंस और फिर दूसरे पॉइंट से उसका डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है. मीन्स AB ओवर दिस वन. तो सेम थिंग विल बी हैपनिंग हियर ओनली. यहां क्या होगा, AB ओवर BC, AB ओवर BC इज देयर इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD ओवर
CD. We are given AB, we are given 15, VC 9, AD we are given, this is AD over CD, AD. So this is AC we are given, इसको we can assume suppose this is X. तो AD कितना हो जाएगा हमारा 12 plus X over CD X. You will do the cross multiplication is here. So that is 15X is equal to, you will multiply this one, 108 plus 9X. You can transpose this side. So 15 minus 9X, that is 6X is equal to 108. So 15 over 9 is equal to, this is AD is 12 plus X over this one. So you will calculate this one only. You will get 15X is equal to cross multiplication. So X is equal to, you will get 18. So this is, you are getting 18 is here only. But we are interested in AD. AD क्या है? This 12 plus 18, that is 30. So answer is C. Now the 39th question में देखिए, इसमें थोड़ा सा calculation है. See now, this is the ABC is a triangle है and AD is the perpendicular and AD is the median. This is the midpoint is here. So अगर मैं साइड को, this is A given है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? This is A by 2. And here to here is also A by 2. But if we subtract this X is there, so this BE become A by 2 minus X is here only. We are interested in B square is equal to, what will be the B square is there only. So what we are supposed to do, इस triangle में लीजिए, in triangle AED में, and then you will get the relation in P square is equal to H square plus X square. Then you must take in triangle this AEC and then triangle AEP. So B square is equal to, you will calculate this one is there. You will get B square is equal to this this option B will be the correct is there only. This B square will come equal to P square plus AX plus A square by 4. And that you can do this there only. देखिए इसमें डायरेक्ट यू कैन डू क्यूपोराइज हियर ओनली. आपको बी स्क्वायर चाहिए तो देखिए इसमें सीधा करो, इन ट्रायंगल AEC में लीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर प्लस दिस इज A by 2 plus X whole square. तो यू विल एक्सपेंड, यू विल गेट दिस वन. और इन प्लेस ऑफ दिस H square plus X square फ्रॉम हियर यू कैन राइट ऑन द P square. So P square plus A square by 4 plus AX. This is the result you are getting. Simple you can do in a moment. So B is the correct answer is there. Direct you can do that. In this one, question number 40, in the given figure, DE is parallel to BC. This is given parallel and AD over DB. The ratio of this one is given. We are interested to calculate the area of ratio in this one. ADEF and CFV in this one is there only. We want to create a relation in this one only. तो देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कैलकुलेशन. देन DB AD over DB is equal to आपको गिवन है 5/4. इसमें just you must add both the side 1 plus 1. So what will get DB plus AD, DB plus AD, DB plus AD. What you will get? AB over DB. That you are getting equal to 9/4. DB plus AD, you will do DB plus AD over DB is equal to 5 plus 4 over 4. 4 will be here only. देखिए इसमें हमने AB over DB is equal to 9/4 निकाला है. इंस्टेड ऑफ दिस वन ओनली इसमें थोड़ा करेक्शन करिए. देखिए यहाँ AD over DB की जगह you take the DB over AD. We can create a relation in this AD and AB. We can create a relation in AD and AB is there. So AD and AB में relation you can create and then you can say this line is parallel to this one. तो क्या होगा कि इस ट्रायंगल का रेशियो जब लेंगे तो DE स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर दैट यू कैन डू. तो DB ओवर AD is equal to क्या होगा 4/5. Now you can add 1 both the side is there. Add 1 both the side. So here you will get AD plus DB. AD plus DB, that is you will get AB over AD. And this is equal to what?
4 plus 5, 9 over 5. 9 over 5. Now you will take the ratio of DEF. इसका लेंगे तो देखिए DE square over BC square will come, and DE square over BC square means then AD square over AB square. तो यहाँ इसको just you can do AD over AB. You will do what you will get, that is 5 over 9 is here only. So if you will take the ratio of this one, that will come equal to the DE square over BC square in these two triangles. Try to understand इन दोनों का. लेकिन यही से क्योंकि ये ट्रायंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस बिगर वन, दैट विल बी इक्वल टू दैट AD स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर होगा. इफ यू आर इंक्लूडिंग दिस साइड एंड दिस वन इन दीज टू ट्रायंगल्स, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमें जब DE लेना है तो यू मस्ट डू द AD स्क्वायर इज हियर, AD स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर. लेकिन ऑटोमेटिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस DE साइड इज ऑल्सो द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल and BC side of this one is there, so you will get the area of this, the ratio of this one only, 9 whole square. You must do 5 over 9 whole square, so that is 25 over 81. So your answer is A is the option, correct one is there. यहाँ सबसे important ये है कि you must include these two side. और ये include कैसे कर लेंगे हम, because this line is parallel to this one, so you can take in this triangle AD and this one, so you will get the ratio of this one only. इनकी साइड का रेशियो है, तो जहां DE स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर आएगा, इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट डाउन AD ओवर AB स्क्वायर, एंड AD ओवर AB इज ऑलरेडी वी नो फ्रॉम हियर ओनली. क्वेश्चन नंबर 41 हियर इज, दिस इज द क्वेश्चन इज थोड़ा सा स्लाइड चेंज उसमें वो है. देखिए दिस इज 6 एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन द 90s हियर इज ऑलरेडी गिवन. देयर इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट A, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 8, सो BC विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 इज देयर ओनली, 10 सेंटीमीटर. सी नाउ इसमें एक कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल, तो ये क्वेश्चन थोड़ा उस पर बेस्ड हो गया है. तो जस्ट यू विल सी कंडीशन ये होती है कि अगर हम किसी सर्कल पर इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, दे आर ऑलवेज इक्वल, वी नो दिस वन. सो दिस इज 90 एंड ये परपेंडिकुलर इज ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि OQAP either will be the square or maybe the rectangle. लेकिन ये साइड इसकी इक्वल है, तो इट मींस इट विल बी द स्क्वायर, तो ये भी R हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो द R. तो इफ AQ इज R, तो व्हाट अबाउट दिस PQ, दैट इज 8 minus R. एंड जितना PQ होगा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट विल बी इक्वल टू दिस CM, so this is also the 8 minus R is here. Similarly this BP will be equal to what, 6 minus R, and जितना BP होगा that will be equal to the BM, that is 6 minus R is here only, and the sum of these two is equal to 10. 6 minus R plus 8 minus R is equal to 10 is here only. You will solve this one, you will get R is equal to 2, so your answer is 2. In the same one is here only, in this triangle, ये angle, exterior angle, this angle will be equal to this one. Alternate segment में angle equal होते हैं, that is there. And similarly this angle will be equal to this one. And by using this property, direct you can apply. तो देखिए दोनों triangle similar हो गए, triangle PAC similar to triangle PBD is there only. And if both are the similar and we are interested in CD को अगर मैं x ले लूँ, and PA we are given the 2, AB we are given 4, and PC we are given 5 is here only. So in this triangle PAC से स्टार्ट करें, that is PA, and this angle is equal to this one, bigger one में PD. Equal angle opposite side ratios are equal. This angle opposite side is PC over this angle is equal to this one, इसका opposite side PB. This is, तो देखिए PA is what, 2 over PD is 5 plus X, AC 5 over PB 2 plus 4, 6 is here, and you must solve this one. So you will get what, 25 plus 5x is equal to 12. So 5x is equal to, you will get the negative value, so x cannot be the negative, so our answer is none of these, this one. Now these questions are based on the competency. Question is given here, Ram was want to do the paint the window grill of his house, so that he brought a 5 meter ladder. The ladder जो है ना, इसकी length given है 5 meters here, and the bottom of this one from this wall is the 3 meter, this one.
दिस इज आपका वॉल है, तो दिस विल बी द 90 इज देयर ओनली, लाइक so from the base of the wall is there. Now questions are there based on this one. What is saying? The theorem used to find the height of the point on the wall. You are interested in h. तो हम किस theorem के through निकाल सकते हैं? Pythagoras. So your answer is B, because he is asking by which theorem, by using that theorem, which theorem we can find the height is there only. So then Pythagoras theorem we can apply. Then you can find out h. Now height of the point on the wall where the top of the ladder reach is. See now, this is 3 and we are given this is 5. So if you will apply the Pythagoras, 5 square is equal to h square plus 3 square. This is, so 25 minus 9. So h square is equal to, direct I am doing, 25 minus 9 is 16. So h will be equal to 4. So height will be equal to 4 because it cannot be the negative. So that 4 meter is there. So our answer is C. Now if the ladder is moved 1.6 meter towards the base of the wall, अगर हम towards the base of the wall 1.6 सेंटीमीटर से फोर्स कर देते हैं तो ये कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी? दैट इज 1.4 पर नाउ मीटर. Then the distance by which the ladder will slide upwards on the wall. तो वो ये पूछ रहा है कि जब इसको हम यहाँ खिसकाएंगे तो नेचुरली इसकी हाइट ऊपर जाएगी हियर ओनली, तो वो हाइट कितना होगा? दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट इज देयर ओनली. बट अल्टीमेटली दिस हाइट, दिस वन लेडर का लेंथ तो ऑलरेडी 5 है. तो सपोज अगर मान लीजिए हमने इसको 1.6 किया, यहां से खिसकाया, तो देन इज आस्किंग देन द डिस्टेंस बाई विच द लेडर विल स्लाइड अपवर्ड्स कितना जाएगी? सपोज ये मान लीजिए x जाएगी. दिस इज h इज ऑलरेडी इन द 4. तो यू मस्ट अप्लाई इन दिस पाइथागोरस थ्योरम 4 plus x होल स्क्वायर प्लस 1.4 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 square is here only. You must calculate it. You will get the value of x is here only. You will get the value of this one is the slide. कहाँ पर स्लाइड करेगी? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. तो दिस इज 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1.96 इज इक्वल टू 25. सो देखिए अगर हमने ये टेक्निक यहाँ अप्लाई किया तो यू विल बी इन ट्रबल इज हियर ओनली व्हेन यू विल डू द फैक्टर्स. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. करना क्या है? सिंपल सा फंडा है. इसका स्क्वायर करिए 5 का स्क्वायर माइनस 1.64 स्क्वायर यू विल डू, तो यू विल गेट 23.04. अब इस 4 में क्या ऐड करें कि उसका स्क्वायर करने पर यू मस्ट गेट दिस वन इज देयर. तो डायरेक्ट यू मस्ट चेक दिस नंबर. देखिए 4.2 का स्क्वायर करेंगे यू विल नॉट गेट दिस वन इज देयर. इफ यू विल टेक दिस 4 इज हियर ओनली मीन्स 4 sorry, this is we were doing this one because see in this one तो 4.2 you are taking. जैसे x you are putting 0.2 तो 4.2 square you will do, never you will get is there. तो just you will take 4.8 x you will take 8 is there. ये x की जगह पर ये वैल्यू रखिए डायरेक्ट एंड देन यू मस्ट चेक कि स्क्वायर उसका किसके बराबर आया. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द 4.8 स्क्वायर. तो दैट इज द क्वाइट बेटर कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बनाई जैसे वी वर ट्राइंग, तो यू मे बी इन ट्रबल ड्यूरिंग द फैक्टर्स देयर ओनली. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. डायरेक्ट अब यू मस्ट चेक दिस वन. डी है देन ए मैन गोज 4 किलोमीटर इन ईस्ट. You know the direction is east, west, and this is north and south. The person is going 4 kilometer in east, 4 kilometer गया, फिर then north में गया 3. This is 3. Now the distance of the man from the starting point ये निकालना. तो डायरेक्ट पाइथागोरस करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, so it will be the 5 meter is there. देखिए यहाँ थोड़ा यूनिट ध्यान रखना है. यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर, so your answer should be in kilometer, 5 kilometer. But none of them is given the 5 kilometer. बच्चे क्या करते हैं बहुत जल्दी से 5 मीटर पर टिक कर देते हैं. नो, आंसर इज योर नन ऑफ दीज. यू शुड बी वेरी केयरफुल. एंड ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट C. ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है C पर. दिस इज C एंड दिस इज द पॉइंट B. P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB. C से AB पर परपेंडिकुलर है P. दिस इज एंड if the length of BC is small c है ये. BC is A. BC is A. There is a correction.
सो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये मिसिंग है, ए सी इज देयर, तो बी सी वी आर गिवन ए सी इज गिवन बी एंड ए बी इज गिवन सी इज देयर, वी आर सपोज टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इज हियर ओनली। देखो किसी भी ट्रायंगल से ले लीजिए, जस्ट टेक इन ट्रायंगल ए सी बी एंड सी एम बी, बोथ विल बी द सिमिलर। ये 90 है, दिस इज जो 90, दिस इज एंगल इज कॉमन है, तो एंगल ये दिस वन विल बी इक्वल टू एंगल 2, थर्ड एंगल इज देयर, तो डायरेक्टली यू कैन टेक द रेशियो इज देयर। छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल सी एम बी, तो दैट इज बी सी ओवर in this bigger triangle ACB, that is AB is equal to इसका छोटे से CM over bigger one is AC is equal to 1 का अपोजिट MB over 2 का अपोजिट is BC is there only, this is BC. Now you can take the BC, we are given this is A over AB is C, CM is P, AC is B is equal to MB, we don't know that MB over BC is A is here। तो देखिए यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला है, AB is equal to PC, तो AB is equal to PC is given is AB here, yes this is, so this is the relation is correct is here only, okay। so थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो इसको प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल, and you will get shortly next video. Thank you very much.